का कोशिश सही किया कह था। रहे हैं डॉक्टर भास्कर, मैंने कांग्रेसनल हियरिंग में जो ब्रेनस्ट्रप है, जो चेयरमैन है सेलेक्ट सब कमिटी के, मैंने उनका स्टेटमेंट ओपनिंग रिमार्क भी देखा और क्लोजिंग रिमार्क भी देखा। वो ओपनिंग रिमार्क में भी कह रहे हैं और क्लोजिंग रिमार्क में भी कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बेटर प्रिपेयर्ड हो। मतलब उनका इंटेंशन अभी भी है कि आने वाले दिनों में महामारी आएगी। वो मतलब इस बात को बहुत ही पोलाइटली पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं कि महामारी तो थी, लाया कौन, आया कैसे, ये नहीं है। वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ये महामारी थी और महामारी आ भी सकती है, दोबारा आ सकती है, जो कि इन फार्मा माफियाओं का नैरेटिव है। क्योंकि असली मोटो उनका यही है कि पब्लिक के जहन में ये घुसा दिया जाए कि ये महामारी बहुत भयंकर थी, इस तरह की महामारी और आ सकती है। आप देखते होंगे कि प्लांटेड न्यूज कई बार अखबारों में छप रहे हैं लगातार, उसके बाद भी छप रहे हैं। सौम्या स्वामीनाथन एक झूठी महिला जो है, झूठी वैज्ञानिक जो है, जो पूरी तरह से स्टूज है बिल गेट्स का, वो आकर के प्रचारित प्रसारित करते रहती है। और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में क्या, सभी अखबारों में प्रोमिनेंटली उनका आर्टिकल, उनका इंटरव्यू पब्लिश होता है। तो ये भी क्या, ये सेलेक्ट कमिटी जो है बहुत ही फाइन ट्यून करके इस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, महामारी या कोविड के ओरिजिन के इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, ये अपने फार्मा कंपनी के हित को साधने का बहुत ही तरीके से प्लान कर रहा है। ऐसा भी लग रहा है आपको? ये तो बोल नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी में पहले क्वेश्चन जो पूछना चाहिए, डैमेज जितना ज्यादा हुआ था, आप देख लीजिए बच्चों में डैमेज का क्या कारण क्या है। लॉकडाउन के कारण हुआ था और स्कूल बंदी के कारण हुआ था। मेंटल हेल्थ इतना प्रॉब्लम हुआ था वो 2020 और 2021 उसके लिए तो देखिए उनको बहुत ग्रिल किया है। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं डॉक्टर भास्कर, मैं इसका ऑडियो भी सुनाता हूं, जरा प्ले कीजिए। Signed off on, and these experiments that happened to beagles paid for by the American taxpayer. And I want you to know Americans don't pay their taxes for animals to be tortured like this. So the type of science that you are representing, Mr. Fauci, is abhorrent. And it needs to stop. Mr. Fauci, you also represent the type of science that where you confess that you made up the COVID rules, including I didn't hear what you 6 said. feet social distancing and masking of children. I never said I made anything up. You admitted that you made it up. You I made it didn't up as say you I went. made it up. So are you saying this is fake news, Mr. I Fauci? didn't say I made anything up. ये इसमें कम से कम इंटेंशन पर तो डॉक्टर भास्कर ये आप कह सकते हैं कि जो उनको सवाल पूछा जा रहा है, एक समय में आपको याद होगा जब एंथनी फॉची ने कहा आई एम द साइंस, तो उसको वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन, मेरा इंटेंशन कुछ और था। मेरा ये कहना था कि हम साइंटिफिक एविडेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये लेडी उनको पूछ रही हैं, साइंटिफिक एविडेंस को तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन वाले भी इवैल्यूएट कर रहे थे, दूसरे डॉक्टर्स भी इवैल्यूएट कर रहे थे, लेकिन उसको नहीं माना उन्होंने। एक और मैं आपको वीडियो बाइट सुना रहा हूं जिसमें एक डॉक्टर खुद हैं, लॉ मेकर्स हैं, जो उनको सवाल कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, बहुत फायरी ग्रिल किया है। ये भी उनका वीडियो देखिए जरा सा। Chairman, it's been insinuated that politicians, only bloggers, only conspiracy theorists are disagreeing with you. I want to point out that I'm probably the only member of Congress that actually treated patients during the pandemic from the very beginning to the very end of the pandemic, during night shifts in the ER. Thousands of patients during that time. And in 2020, I was censored. My medical license was threatened because I disagreed with bureaucrats. Literally taken off the internet as a person who is treating patients with leading-edge technologies, developing theories, but doing my very best, but being censored by the United States government for the first time, stepping in and taking the place of medical professionals as the experts in healthcare. Any dissent surrounding COVID-19 treatments, mask mandates, and any public policy surrounding the pandemic was immediately labeled as anti-science. I watched as public health officials and politicians told my patients what treatment options were best for them, regardless of their comorbidities or their medical history. Despite my education and my training and my experience, my opinions were relegated to conspiracy and misinformation by so-called healthcare experts.
who had never treated a patient throughout the entire pandemic. This has been a black eye on the medicine and has highlighted why government should never insert itself in between patients and their healthcare providers. The American people deserve to make medical decisions through conversations with their physicians rather than politically motivated mandates. Dr. Fauci, did you ever treat a patient for COVID during the pandemic? I was part of a team that was at the NIH that took care. We didn't take care of many of them. Okay, so not hands-on. Got it. Thank you. Why would I be criticized by a bureaucrat for doing my very best as a healthcare? This is a rhetorical question. But why? Why would the government, who's never treated a patient for COVID, you can read all the things you want, but you're not there. You're not seeing patients. You're not watching people die, intubating patients right there with that disease in your face, watching it happen, watching the development of this disease and actually learning from it. But I'm being told by bureaucrats what's right and wrong. And what's funny is everything I was censored on, I was proven to be right. Pretty crazy, isn't it? You said in an interview that you gave as part of an audiobook written by Michael Specter that you believed an institutional should make it hard for people to live their lives so they'd feel pressured to get vaccinated. Could we run the audio clip on that, please? You think can be done about it? I have to say that I don't see a big solution other than some sort of mandatory vaccination. I know federal officials don't like to use that term. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Thank you. All object. भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।